Good morning, dear students. Today I am going to teach you a new lesson, A Tiger in the Zoo. As you know that this poem has been composed by Leslie Norris. He was a Welsh poet and he has written a number of poems in English literature. A Tiger in the Zoo is one of them. In this poem, the poet contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poet compares the life of a tiger in the zoo with its life of natural habitat. We all know that nobody wants to be captive. Everybody loves freedom. So, tiger also loves freedom. Either human beings or animals all love freedom. In this poem, the poet depicts his experiences when he visits a zoo. When he was in the zoo, he saw a tiger in the cage. After seeing the pathetic life of tiger in the pathetic condition of a caged tiger in the zoo, he just imagines the life of the tiger which lives in natural habitat. He feels that if the same tiger is in the natural habitat, nobody dares to go to him. When it will roar, all creatures, all animals, either man or other animals, will run away. Nobody will stand there as a crowd is standing outside the cage and watching the pathetic condition of a caged tiger. Thus, he has composed this poem contrasting the natural condition of a tiger with the pathetic condition of a caged tiger. Now I am going to read the first stanza of the poem and then I will explain. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet range. In the first line, the poet has written two words, stalks and stripes. Stalks means move quietly and silently in a threatening way. तो इस तरह से चलना जैसे आप बिल्कुल शांत हो, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हो और आपके चलने के अंदाज से दूसरे को भय उत्पन्न हो रहा हो. Such type of walking is called stalks. Vivid मीन्स का है क्लियर और ब्राइट. Stripes, long narrow bands. As I think you might have seen a tiger. You might have seen a tiger either in a picture or in a movie or really in forest or in any cage or in any zoo. You might have seen a black stripe on his body. I mean a kind of black line on tiger's body. That is called a stripe. Poet describes in the first stanza that
the tiger is in the cage and he walks he walks slowly and quietly, that appears fearful, that seems that it is going to threaten other animals. He walks a few steps only because the cage is small. And when the tiger walks in a small cage, there is no sound of his legs, because you know that the bottom part of tiger's leg is paddy. That's why here the poet used pads, गद्देदार पार्ट. टाइगर का जो पैर का निचला पोर्शन होता है वह स्पॉन्जी गद्देदार होता है, जिसके कारण जब बाघ चलता है उसके पैरों की आहट की आवाज सुनाई नहीं पड़ती है. In his quiet cage, and cage is quiet peace. There is no sound, there is no murmuring, and nothing is to be done for a tiger in the cage. There is no other animal to which it will hunt. That's why the atmosphere inside the cage is quiet peace. Thus, the poet has written the poet has described in the first stanza. The poet describes the condition of a tiger in the cage. Now, as the poet saw a tiger in the cage, he just imagines its natural habitat. And thus he says that he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Here the poet imagines इस बाघ को प्राकृतिक वन में होना चाहिए, जहां पर वह लंबे लंबे घास में घात लगाए दुबका रहे. कहां? तो सरोवर के किनारे, तालाब के किनारे और पुल के किनारे, जहां पर मोटे तगड़े हिरन पानी पीने आते हैं ताकि यह टाइगर आसानी से उनका शिकार कर सके. That's why the poet describes that the tiger should be in the forest. The tiger should be in the forest, lurking. Here in this stanza, the poet has word some difficult words as lurking. Lurking means hiding, छुपा हुआ. Second word, in the second line, sliding. Sliding का मतलब होता है moving through the long grass near the water hole. Hole means here pool. Hole means here pool where plump deer pass. Plump means chubby, fat is called plump. In two stanzas, the poet describes that the tiger is in the cage is not happy. He should be in the natural forest where it will hunt chubby deer. In the third stanza, the poet describes he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his crouch, terrorizing the village. In the third stanza, the poet imagines that this tiger should be when the tiger is unable to hunt other animal. I mean, sometimes the tiger is unable to find out his prey. That's why in this condition the tiger moves toward the village. And when at the edge of village, at the edge of jungle, when the tiger roars, other villagers became afraid by hearing the sound of roaring, and they think that perhaps the tiger is coming. And when the tiger roars,
his front teeth appears fearful, seems very, very threatening. Terrorizing means का डराना, bearing means का showing, and fangs, two long teeth at the front of any animal. जो भी मांसाहारी जानवर होते हैं उसके मुंह का अगला दो नुकीला दांत होता है जो काफी लंबा और स्ट्रॉन्ग होता है, एंड दैट इज कॉल्ड फैंक्सियर. दैट इज कॉल्ड फैंक्सियर. नाउ आई एम गोइंग टू राइट सम लाइन्स on the board, then after I will explain to you rhyme scheme, because here the poet has used some rhyme schemes also. He stalks in his vivid stripes. This is the first line. The few steps of his cage on pads of velvet, quiet in his quiet rage, Now I am going to teach you the rhyme scheme of this poem. The first rhyme scheme is used by the poet is alliteration, because in the first line you can see that two words begin with the same letter. Stalks begin with S and stripes also begin with S, letter S. That's why here this is the example of alliteration. It's a poetic device. Now in the third line the poet has word the use quiet, and in the fourth line also the poet has used quiet. It means that poet has repeated the same word in two lines, the third and fourth line, quiet and quiet. That's why this is the example of repetition. This is the poetic device. Here the poet has used few difficult words like stalks, stripes. Stalks means move quietly and slowly. Vivid is next difficult word. It means bright or clear. Now stripes. Here the poet has used stripes, long, narrow bands on tiger's body. Now pads. Next word pads. The soft part under the foot of a tiger. Quiet means calm or peace. In this one I have done the difficult words of the first stanza. Now I am going to write the difficult words of the second stanza. He should be lurking in shadow. Here lurking is a difficult word. It means hiding. Now sliding through long grass.
Sliding means moving. Sliding means moving near the water hole. Here we can call it pond also. यहाँ पे होल को हम लोग पन भी कर सकते हैं, बिकॉज होल का मीनिंग आप लोग जानते हैं छिद्र, पोर, बट हियर होल डजंट मीन्स पोर. होल का यहाँ पे एक अलग मीनिंग है, डैट मीन्स पूल, जिसका मतलब यहाँ पे होता है तालाब. जल का एक नैरो सोर्स, आई मीन नैरो सोर्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड होल हेयर. वेयर प्लम डियर pass. In this plump means chubby. Chubby means fatty, जिसके शरीर पे ज़्यादा मांस हो, जिस एनिमल के शरीर पर ज़्यादा मांस हो, उसे हम लोग प्लम बोलते हैं. In this way I have written the second stanza also. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. I have done the few difficult words like lurking means hiding, छुपने का जगह या छुपा हुआ होता है. स्लाइडिंग का मतलब घूमता हुआ होता है. तो पोएट यहाँ पर यह कर रहा है कि इस बाघ को पिंजरा में नहीं होना चाहिए, बल्कि बाघ को इसके नेचुरल हैबिटेट, आई मीन नेचुरल जंगल में होना चाहिए, जहाँ पे वह बड़े बड़े घासों में घूमता हुआ रहे. और उसे कहाँ छुपना चाहिए? तो वाटर होल के पास उसको छुपकर दुबक कर रहना चाहिए, जहाँ पर काफ़ी मोटे तगड़े डियर जल पीने के लिए आते हैं, जिसके कारण वो आसानी से उसका शिकार कर सके. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू, आई एम गोइंग टू राइट यू द थर्ड स्टैंजा. He should be snarling in shadow. At the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. Now, in the first line, snarling make an angry and warning sound. Snarling. Actually, in this word, letter R is used, but when we speak, when we utter, we do not pronounce R. That's why we pronounce this word like snarling in shadow. In this stanza also, you can notice alliteration, because snarling begins with S and shadow begin with S. So here we can say that poet has used alliteration. Now, at the jungles, actually jungle एक हिंदी वर्ड है, but nowadays it has been used as English word in the same way. That is why the poet has used jungle here. Jungle has been adapted by Oxford Dictionary as an English word also. Edge means bank. In Hindi is called किनारा, boundary भी हम लोग बोल सकते हैं. Bearing is the next word. Bearing means swaying. जब इसको लोग बारिंग पढ़ेंगे, बैरिंग तो मीन्स रुकावट,
बट यहाँ पे रुकावट नहीं, स्विंग होगा। फैंग्स, एक्चुअली आप लोग साइंस में फैंग्स वर्ड पढ़े होंगे। फैंग्स एक्चुअली स्नेक के पास होता है। आई मीन स्नेक हैज फैंग्स, आई मीन पॉइजनस टीथ, पॉइजनस लॉन्ग टीथ ऑफ स्नेक आर कॉल्ड फैंग्स। बट हेयर यहाँ पे पॉइजनस टीथ नहीं होगा, बल्कि टू लॉन्ग टीथ एट द फ्रंट ऑफ माउथ। जो भी मांसाहारी एनिमल होते हैं उनके मुंह के अगले जबड़े में सबसे आगे फ्रंट पार्ट पर में दो लंबे लंबे और नुकीले दांत होते हैं, उनको यहाँ पे पोएट ने फैंग्स कहा है। टेरोराइजिंग, टेरोराइजिंग, टेरोराइजिंग मीन्स फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग, टेरोराइजिंग मीन्स फ्राइटनिंग मीन्स डराना होता है। अब यहाँ पे पोइट कहता है जब टाइगर को जंगल में शिकार नहीं मिलता है तो भूख के मारे कभी कभी टाइगर गांव की ओर निकल पड़ता है। जब वह जंगल के किनारे पहुंचता है तो वहां पे आकर के वो जोर जोर से दहाड़ता है और गांव वालों को डराता है अपने अगले दांतों से। आई मीन जब वह दहाड़ना शुरू करता है उसका मुंह खुलता है और उसके जो आगे वाले फ्रंट फैंग्स हैं उजले उजले वो दिखने लगते हैं, जिससे गांव वाले काफ़ी डर जाते हैं, भयानक हो जाते हैं। और यही टाइगर का नेचुरल क्वालिटी है जो पोएट यहाँ पर मैं लिखना चाहता है। क्योंकि बिकॉज व्हेन टाइगर इज फ्री, व्हेन टाइगर हैज फ्रीडम, इट फ्राइटेंस अदर्स, तो बाघ दूसरे को डराता है। एंड टाइगर इज पॉपुलर फॉर इट्स टेरराइजिंग नेचर, बाघ अपने ड्रावनी नेचर के लिए तो मशहूर है दुनिया में, आप सब लोग जानते हैं। तो पोएट का कहना है कि जब बाघ इस पिंजरे से बाहर किसी नेचुरल वन में होगा तो वह ड्रावना होगा और उसका रियल नेचुरल जो अपीयरेंस है वो लोगों के सामने आता है। तो आज के वीडियो क्लास में बस यहीं तक, और इसके आगे जो दो स्टैंजा बच रहा है पोएम का, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा। और आपसे बस एक लास्ट विनती है कि आप घर पर इसे जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि आपके मतलब सहायता के लिए हमने बोर्ड पे लिख भी दिया है, हर चीज़ को लिखा है, राइम स्कीम और पोएटिक डिवाइसेस लिखा है, डिफिकल्ट वर्ड लिखा है। एंड दैट इज व्हाई यू रीड इट इजिली एंड यू रीड दिस पोएम at first by yourself, then listen to my video. That's all. Bye.